Today's my topic is advantages and limitations of AI tools in food and nutrition teaching as well as research. As we all know, that it is a double-edged sword, we can say. AI has a lot many benefits and it has number of disadvantages also. So even recently, Dr. Shefali has rightly said regarding the ChatGPT and lower brain exercise of the in one study they have found this kind of results also. So first of all, I would like to say uh, AI is an assistant for teaching and research, right? But it must not be used as a replacement of a teacher or researcher. This is the main aim of my topic because what happens कि हम इसका एक जेनरस और मॉडरेट यूज करना भूल जाते हैं. कई बार ये होता है कि बच्चों को एक इजी वे मिल जाता है कि एआई में हम एनीथिंग वी विल अपलोड और कुछ भी हम उसका रिजल्ट लेकर उसको प्रेजेंट करेंगे. रिसर्च में भी हम शॉर्टकट्स बच्चे ढूंढते हैं, स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, रिसर्चर्स ढूंढते हैं. तो एट दैट टाइम या फिर हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं. तो एट दैट टाइम इट मे रिप्लेस. तो ये जो एक वक्त है वो हमें नहीं आने देना है. वी जस्ट वांट टू यूज एआई वेरी वाइजली एंड इंटेलेक्चुअली फॉर आवर पर्पस एंड वी जस्ट वांट टू यूज इट एज अ टूल दैट कैन सर्व आवर पर्पस. It should not dominate us. We should use it as a useful tool. So first of all, let's start with some very basic things. What is AI in teaching and research? Why it is so useful? So basically, artificial intelligence in education refers to the use of computer system that can perform tasks typically required human intelligence. Like जैसे कोई भी टीचर है वो जो भी टीचिंग के लिए कर रहा है, जैसे कि उस बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए असाइनमेंट्स बनाना, उनको इवेल्युएट करना, उनके अटेंडेंस लेना, दिस ऑल टास्क कैन बी डन बाय एआई नाउअडेज. सो इट इज utilized likewise. AI powered tools can also provide insight to the student into students performance, means how they are actually learning. उनको कहाँ पर दिक्कतें आ रही है, वो कहाँ अच्छे हैं, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं. All this real time data we can get because it can constantly monitor the students performance and it can constantly identify where they are lacking and where they are good. So this can be useful for the teachers in future. Now why we are talking about the AI? If we say कि AI should not replace the teachers, so why we should promote AI? See, AI is a very helpful tool. It is a very carefully designed tools. Nowadays we all know that the number of teachers are limited in every institutions and there are large number of students in the class and there is a lots of pressure on teachers also. Not only that, the same teacher is also teaching UG, PG, PhD, and hence they are performing multiple roles like instructor, mentor, planner, assessor, administrator also, right? Because we have a high administrative and non-teaching workload also. तो जो भी यहाँ पर teachers है या जो भी लोग इस field में है, टीचिंग में एज अ प्रोफेसर या एनजीओ में काम कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग इट डजंट मीन कि ये हम फॉर्मल फूड एंड न्यूट्रिशन टीचिंग की बात कर रहे हैं जो क्लासरूम में हो रहा है. बिकॉज फूड एंड न्यूट्रिशन एक बहुत वास्ट एरिया है और उसमें इनफॉर्मल एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर कमिंग स्लाइड्स. तो इट लिमिट्स द टाइम ऑफ टीचर्स टू प्रिपेयर अ गुड क्वालिटी एंड डिटेल्ड कोर्स मटेरियल, राइट? And we all know that we are suffering all these problems in our day-to-day life. Even PPT, audio visual aids, video lectures that we nowadays जो modern teaching methods हैं उनमें हम ये सारी चीजें use करते हैं और it requires a lots of time to prepare all these stuffs. Not only this, we are witnessing that our courses are also frequently changing. Every 4 to 5 years there will be a new syllabus and there will be introduction of newer teaching methods as well as so many newer courses also. So that constantly creates the burden to the teachers also, right? So whenever we are using automated administrative task,
So it may help. My PPT is visible. I doubt whether it is visible or not. No, No, ma'am. ma'am. You Visible. have stopped sharing. Okay, just let me know. Check it out. Mhm. Okay, so we are going to do some exercise also. Specifically, I was told to use Gemini, so I am going to perform some tasks on that also. Before that, we just discuss some theoretical points also. So, automated or administrative tasks are also done by AI. That this will help us a lot, and it will freeing up the valuable time for educator to focus on teaching and mentoring and we have grading the assignments या फिर MCQ types test लेने हैं उनको access करना है तो that will be very easy with the help of AI tools. And nowadays even AI also allows the teachers to instantly personalize, prepare the material which is personalized to students, and we can also change the difficulty levels of the material. I mean, as per the students' level, and that we can spare our valuable time for the mentorship of the students. From हम उनके लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट को हम थोड़ा सा और डिस्कशन में उनको गाइडेंस में पर्सनल टच दे सकते हैं तो उस हिसाब से हम उनको उनका जो टीचिंग और पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. Another benefit of AI is it is available for 24/7, right? So whether it is a formal education or informal education, AI will be there. AI provides students or learners. If it is informal education, there will be some learners with constant access to assistance whenever they need it, whenever they are free, whenever they have the time or requirement. And AI systems are available 24/7, offering personalized help. It may vary person to person. Even in a single family, there are 4 family members, and all four they require different kind of dietary solutions or diet plans or dietary advice. They will get it for individualized. So this is the round the clock support that ensures the students and learner that can learn at their own pace and frees up the teachers or educators or moderators time that he is spending. So there are so many AI tools that may help in better lesson planning and content creation, like Magic School AI. It is a highly popular among Indian educators for instantly generating lesson plans and individualized quizzes and rubrics. Then Curipod is also there. It is used to build interactive AI-powered slides that boost classroom participation through real-time polls and open-ended student responses. So immediately we can see how the students are reacting to our teaching. Now AI helps in assessment of academic integrity also, like Gradscope, Turnitin. We have already discussed the various tasks performed by Turnitin. So these are also available. Gradscope, as the name suggests, is automates and streamlining the grading process by grouping similar written or mathematically answered together. So it is for the assessment purpose. Then Turnitin is also there. It claims to maintain academic integrity, streamline grading and feedback, and specifically we all use it for detecting and deterring the plagiarism. So it improves our research as well as our thesis output also. And in many ways it is a very helpful, and nowadays it is very popular also. And if we see most of all the educational institutions in India, they are using their own softwares for academic purpose, for management purpose, and for other administrative purpose. So all these softwares are now very much boosted with the AI, and they are AI powered, and we are using it in our day-to-day life. So advantages of AI in teaching and learning food and nutrition.
So now coming to the important points, now we just want to share the most important thing. What I like for AI is it is very useful for specially challenged students. See, though students, or I will say learners, those who are in a rural area also, to speech recognition and natural language processing technologies that enable voice to text and text to speech conversion. This will aid in students or learners with disabilities and support. It supports the language learning also, and it will minimize their efforts, and it will give them the precise result for their learning purpose. AI program that provide one-on-one tutoring tailored to the student's specific learning needs and style. So every challenged student or learner who is physically or specially challenged, they may have a personal assistant for teaching, for performing their day-to-day life tasks. एंड अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो उनका डेली जो डाइट है उसमें क्या उनको चेंजेस करने चाहिए, उनकी फिजिकल या मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से उसको स्पेशलाइज्ड क्या चेंजेस करने चाहिए, कितना उनका कैलोरी आउटपुट है, कितना इनपुट है, मतलब कितना उनका डेली न्यूट्रिशनल इंटेक है, कितना उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट है, हाउ मच कैलोरी दे आर बर्निंग, व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल एक्सरसाइज, और हाउ एग्जैक्टली दे कैन बिकम मोर फिजिकली एबल। तो ये बहुत सारे डिटेल जो है वो सारी चीजें उनको एआई से हेल्पफुल में हो सकती है, दैट टू अटेंडिंग विदाउट अटेंडिंग द स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो. Now, it's a very good cartoon. It shows the before AI and after AI. That before AI, most of the time we are very much dependent on the, we can say, notebooks and library and all this kind of stuff. And now with the help of AI, we are getting so many virtual things, or real and real life is there. So it gives a very realistic and stimulative environment to learn the more and more things regarding nutrition, regarding our daily diet, regarding the physiology, regarding the digestion and absorption of various nutrients. तो मैं कई बार इस चीजों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ साल पहले जब हम सिर्फ बुक्स और इंटरनेट पर डिपेंडेंट थे, उसके कंपैरिजन में आज हम खुद काफी चीजों को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उनको अच्छे से यूज में लाकर स्टूडेंट को सर्कुलेट भी कर सकते हैं. तो ये तीनों है, इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड गूगल जेमिनाई एंड चैट जीपीटी. आई थिंक डॉक्टर शेफाली एंड अदर स्पीकर्स हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. तो I had to change my PPT at the last moment also because so many things were repeat हो रही थी, तो that I have changed. So specifically so many advantages are there and so many disadvantages are also there, like bias. It was already talked. Bias results में बहुत सारे results, because AI has their own database, or we are going to see the results also now in coming slides ki how bias affect our search results. So that we are going to check through Gemini also. Then data privacy and security. So many learners have raised their concern regarding their PhD data privacy and security. So all the tools, I don't know whether all the tools are so much safe for this purpose, because many a times हम ये भी देखते हैं कि हमको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब भी हम प्लेगियरिज्म चेक करें तो अपना फाइनल डॉक्यूमेंट वन टाइम अपलोड करें. इफ वी विल अपलोडिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चों को कई बार आदत होती है ना कि सेम में फर्स्ट दे विल चेक कि मेरा प्लेगियरिज्म कितना है, फिर अगेन दे विल मॉडिफाई इट एंड देन अगेन चेक. तो इससे क्या होता है कि एआई विल कॉपी ऑल दोस थिंग्स आल्सो, एंड इट में अब हमारा जो अपना राइटिंग है दैट में आल्सो कम्स अंडर द प्लेगियरिज्म. So and another thing is the concern about data privacy. I'm not so sure about this. So that is also a big concern. Then reduced human interaction, because we all are so much dependent on machines. So after all, we are a human being. So specifically when we are talking about food nutrition, so there are so many areas in food and nutrition like community nutrition. So
we cannot rely only on the devices, because we have to deal with the humans. So it definitely reduces the human interaction. And there are some other things also, like repetition of content, work, idea, and loss of creativity, right? तो ये हम सब ने देखा है। कई बार हम इस चीज को देखते हैं कि क्लास में जब हम कोई डाइट प्लानिंग देते हैं और उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल उनको कोई एक केस स्टडी दे रहे हैं या एक पेशेंट दे रहे हैं जिनका हम हाइट, वेट, बीएमआई और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है दैट वी शेयर विद द स्टूडेंट्स, and then we ask them to prepare a diet chart, right? I have witnessed कि many a times it happens कि student used to use AI for preparing the diet plans, and most of them are coming up with the similar kind of diet plans. So they lose their creativity, they don't think. Suppose मैं आपको एक recent idea दे रही हूँ इसके लिए कि एक डाइट प्लान अभी बनाना था बच्चों को, और उसमें एक कंडीशन ये थी कि द पर्सन इज डायबिटिक एंड द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, राइट, एंड इज अ इंडियन बेसिकली। तो उनके लिए आपको डाइट प्लान बनाना है। स्टूडेंट्स हैव यूज्ड एआई, एंड एआई में उनको ये बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉर्निंग वार्म मिल्क विथ सोक्ड आलमंड, 5 to 6 सोक्ड आलमंड। तो ये एआई डाइट प्लान में रेज हो गया, बच्चों ने वही सबमिट कर दिया। सुबह पेशेंट को वो गर्म दूध के साथ 5 से 6 बादाम सोक करके देंगे, ठीक है, बट दे डोंट यूज देयर क्रिएटिविटी और देयर थिंकिंग पावर, या दे डिडंट अप्लाइड जो वो क्लास में सीखे थे, उन्होंने बस उसको देखा और कॉपी किया। Now, if the person is coming from a lower socio-economic background, how he can कैसे वो अफोर्ड करेगा सुबह सुबह आलमंड्स खाने? या फिर इंडियन डाइटरी पैटर्न में हम मॉर्निंग्स में सोक्ड आलमंड नहीं खाते हैं। हाँ, सोक्ड पीनट आप दे सकते हो, दैट टू लुकिंग टू द देयर lipid profile and the other diagnosis also. So definitely students lose their creativity, they just rely upon it and they hardly open the books also. So this is a very good sarcasm, like this is why do I have to go to school? Thanks to AI I can have middle school, high school, college and graduate school finished within an hour. तो स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि एनीथिंग वी आर गिविंग द वी आर अपलोडिंग समथिंग इन एआई एंड दे आर गिविंग अस एंड वी हैव लर्नड इट। तो एक जो डिफरेंट लेवल पे उनको जाकर सीखना है वो शायद इसमें मिसिंग हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। Now coming to the food and nutrition, which are the key areas. So community and public health nutrition, dietetics and diet therapy, food processing, product development, and institutional food management. So these are the different areas in which we used to work, and we used to learn the things, and we used to practically work, the students used to work. Like, so first of all, we will start with some exercise in AI in community and public health nutrition. So I will say definitely कि AI का इसमें बहुत अच्छा रोल है और मुझे इससे काफी अच्छे हेल्प भी मिला है। लाइक बेटर एंड इफेक्टिव न्यूट्रिशन एजुकेशन टूल्स हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वी ऑल नो कि इफेक्टिव एजुकेशनल मटेरियल जो हम कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में यूज करते हैं, जब हम कम्युनिटी में जाकर उनको माल न्यूट्रिशन के लिए या हेल्थी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के लिए वी यूज टू अवेयर देम। तो जनरली वी यूज टू यूज चार्ट्स, graphs and educational games and posters, audio, video etc. See, अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास जब तक एआई नहीं था तो हम खुद से ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते थे, या फिर हम चार्ट्स या फ्लेक्स बैनर्स पे उसको प्रिंट करा के कम्युनिटी में जाते थे। कुछ बच्चे अपने हिसाब से ही स्किट या छोटे छोटे ड्रामा बनाकर परफॉर्म करते थे। तो आई विल से कि दोस ऑल नॉन फॉर्मल वे ऑफ teaching or nutrition or creating awareness about food and nutrition was very helpful at that time. But nowadays we have AI, and with the help of it we can prepare immediately
this type of teaching materials, that too in a almost free of cost. They are very innovative. Instantly we can prepare, very attractive also, efficiently use कर सकते हैं उसको, बहुत जल्दी मॉडिफाई कर सकते हैं और इजी टू प्रिपेयर है। तो हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव आस्क्ड जेमिनाई to prepare food pyramid. So I simply asked Gemini to prepare a one food pyramid that I can utilize for the community. तो जब भी हम एआई को यूज करते हैं, वो इसमें एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि वो हमारा जो कमांड हम उसको देते हैं या जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो उस हिसाब से हमें रिजल्ट देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या हम भी कई बार इस चीज को नहीं देखते, ध्यान नहीं देते कि हम जनरलाइज वे में उनको कमांड देते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि प्लीज प्रिपेयर फूड पिरामिड दैट आई कैन यूज फॉर अ कम्युनिटी अवेयरनेस पर्पस। तो उसने मुझे एक फूड पिरामिड इंस्टेंटली बना के, उसका पोस्टर बना के मुझे दिया। फिर आई हैव गॉन थ्रू इट। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के साथ किया हुआ है। तो फिर हमने देखा कि ओके, ये फूड पिरामिड तो इसने बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है फूड जो है वो ऐसे है कि हमारे यहाँ लोकल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एप्पल या फिर ब्रेड, दिस फूड वी आर नॉट ईटिंग। तो मैंने अगेन वी हैव गिवन द कमांड कि अकॉर्डिंग टू अवर कम्युनिटी, please prepare a food pyramid that is actually including all the Indian food items. So again it has prepared a food pyramid. तो we can see कि fats and oils में जो पहले जो था, जिसमें डोनट्स और पेस्ट्री, चॉकलेट्स, चीज, we can see all this type of stuff थे, और नीचे ब्रेड और नूडल्स और ये सब था। उसने इंस्टेंटली चेंज करके एक नया फूड पिरामिड बना के दिया। See, this is a very helpful thing. बिकॉज वेन वी आर गोइंग टू द कम्युनिटी, हमारे पास भी या तो हम वही अपने पुराने जो टीचिंग के टूल्स है, पोस्टर्स है, जो फ्लेक्स बैनर्स हम बनाए हुए, वही हर बार यूज करते हैं। तो इंस्टेंटली वी कैन मॉडिफाई दिस थिंग्स। अगेन वी फेल्ट कि ओके, वी आर इन गुजरात एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कम्युनिटी आर वेजिटेरियन. So if we are showing this non-veg servings or non-veg food in protein portions, तो that will be very confusing for them कि हम प्रोटीन के लिए अब क्या खाएंगे। तो again we gave the command and we modified and we prepared a vegetarian फूड पिरामिड। सो इंस्टेंटली इट हैज चेंज्ड प्रोटीन। आप देख सकते हैं कि उसने जो पहले मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स का जो प्रोटीन था वो चेंज करके उसने डेयरी प्रोटीन्स जो है वो हमको रिप्लेस करके दिया है। और बाकी जो है वो दाल और जो भी ऑयल सीड्स है वो भी उन्होंने हमें दिए हैं उसमें। तो दैट वी फिल्ड अप द रिक्वायरमेंट्स। लाइक in Gujarat we have farmers are growing lots of peanuts, groundnuts. तो यहाँ पर जो भी लोकली अवेलेबल है उसके नाम जब भी हमने फीड किया तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। तो इंस्टेंटली वी हैव अ फूड पिरामिड आल्सो। नाउ व्हाट वी कैन यूज इट इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वी कैन गेट अ प्रिंट और वी कैन शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो। सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि एक एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे यहाँ पर। हम जेमिनाई के यूज से एक न्यूट्रिशन गेम जो है वो उसको जनरेट करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम जाते हैं कम्युनिटी में, तो ये वहां पर जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको हम फॉर्मल में तो सिखा नहीं सकते हैं। उनको अगर हमें इंटरेस्टिंग न्यूट्रिशनल एजुकेशन टूल्स अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो डेली यूज करे और उससे वो सीखे, तो दैट विल बी वेरी नाइस। स्कूल के बच्चे हैं, अगर उनको भी हम सिखाना चाहते हैं न्यूट्रिशन, देन वी हैव टू यूज सम न्यूट्रिशनल गेम्स आल्सो, एजुकेशनल गेम्स आल्सो। नाउ वी ऑल नो कि अर्लियर हम इस गेम्स को कैसे खेलते थे। या तो हम क्विज, मैक्सिमम क्विज बनाते थे, या कभी कभी कुछ प्रिंट आउट्स लेकर जाते थे, उससे खेलते थे। सो इट वाज अ वेरी टीडियस जॉब टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ गेम्स आल्सो। तो मैंने आई जस्ट गेव एन कमांड टू द जेमिनाई कि